Hello students, I am back with the third lecture of Pharmacy Act 1948. As I have told you before that I would be covering this topic of Pharmacy Act 1948. I have covered 2 lectures and this is my third one. So just have a brief of the first 2 lectures that I have taken here. I have covered the Pharmacy Council of India, its definitions, objectives of the Act and education regulation in my first lecture, and then coming to the constitution of Central Pharmacy Council in my second lecture. That is, the Central Council, how does it formulate, how does it regulate the functions that it control. So now let us see, we will be talking about the State Council and the Joint State Council of Pharmacy of India. The State Pharmacy Council and the Joint State Pharmacy Council, its constitution and functions. So these are the main highlights of today's lecture. State Council, जैसे कि state central बना था, central का constitution हुआ था, it was controlling the major operations of the Pharmacy Council in India. Similarly, at state level Pharmacy Council of India कैसे बनती है, वो क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करती हैं, and with it the joint state, when 2 states together formulate a council, then we termed it as Joint State Pharmacy Council of India. So we will be talking about these 2 councils, its constitution and functions in this lecture. So here comes the State Pharmacy Council. State Pharmacy Council also consists of 3 different types of members. As we have seen the Central Pharmacy Council, there were elected members, nominated members and ex officio members. Similarly, over here in the state also we have 3 ways in which the members are appointed. We are talking about office bearers. We are not talking about executive committee, that was the part in central government. In state government we don't have executive committee, we just have office bearers, and these office bearers are similarly appointed as elected members, nominated members and ex officio members. I have already given you a brief that how elected members, how nominated members and who are ex officio members of the group. Elected members elect किए जाते हैं, nominated members जो काउंसिल के हेड्स हैं वो अपॉइंट करते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अपने आप अपॉइंट किए जाते हैं. सो लेट्स सी इट इन डिटेल वन बाय वन. If we talk about elected members, again if we compare it with the central government, there were also 6 members and here is also 6 members. Elected from amongst themselves by registered pharmacists of the state. These are pharmacists. वहाँ पर टीचर्स थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वहाँ पे टीचर्स थे, जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं. 1 member elected from amongst themselves by the members of each medical council of the state. MCI का 1 member है. 6 members स्टेट के फार्मासिस्ट होते हैं, तो ओवरऑल वी हैव 7 members. 7 members in as elected members as of the state council, जो कि वहाँ पर 8 था. इफ़ यू रिमेंबर 8 में 6 टीचर्स थे, एक MCI था और एक फार्मासिस्ट था. यहाँ पर 6 फार्मासिस्ट हैं, एक MCI है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फार्मासिस्ट पार्ट, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट का 3rd पॉइंट नहीं है, फार्मासिस्ट को टीचर्स को रिप्लेस कर दिया है फार्मासिस्ट से. सो वी हैव 6 फार्मासिस्ट एंड 1 MCI member, or you can say a doctor. So these are 7 elected members of in State Pharmacy Council. Now let us see the nominated members. Who are the nominated members?
Nominated members की बात करें, then we have 5 members of whom at least 3 shall be possessing a degree or a diploma in pharmacy or pharmaceutical chemistry or to be a registered pharmacist nominated by the state government. 5 members nominated होते हैं. तो overall वो 5 members कौन कौन हो सकता है? वो 5 members हमारे pharmaceutical chemistry के डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं और they can be appointed by the गवर्नमेंट. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं. इट इज़ अ क्लमजी, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है. 5 मेंबर्स होने हैं. दे कैन बी अ ग्रेजुएट पर्सन, क्योंकि इफ़ वी टॉक अबाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो वो भी क्या है, वो भी तो एक डिग्री और डिप्लोमा होल्डर ही तो है. तो इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि कौन क्या होगा. इट इज़ जस्ट 5 मेंबर्स, दोज आर नॉमिनेटेड मेंबर्स. अब चाहे वो डिग्री होल्डर हों, डिप्लोमा होल्डर हों, या फिर हम उनको फार्मासिस्ट के फॉर्म में काउंट करें. तो अभी हमने देखा हमारे पास 7 मेंबर्स थे इलेक्टेड एंड नाउ वी हैव 5 मेंबर्स एज नॉमिनेटेड. एंड नाउ लेट्स सी द एक्स ऑफिशियो मेंबर. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स सेम रहेंगे जैसे हमारा सेंट्रल था, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. वहाँ नंबर 3 था बट लोग डिफरेंट थे, यहाँ पर नंबर 3 है. अब देखते हैं लोग कौन होंगे. चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट. चेंज क्या हुआ? स्टेट. वहाँ सेंट्रल था, यहाँ पर स्टेट है. Government analyst nominated by the state government under the Drug and Cosmetic Act 1940, जो कि government analyst है. Officers in charge of the drug control organization of the state. So we have again the 3 members who are counted as ex officio members. So let's see the total number of members that will constitute the state council. We have 7 and 5 we have 12, and 12 and 3 that is 13. So we have 13 members, 15 members, sorry, we have 15 members who will constitute the State Council of Pharmacy. So I suppose it is clear for you all. I have covered up the State Council. State Council में members कैसे appoint किए जाते हैं? In the 3 way: elected, nominated and ex officio. We have elected members which are 7 in number, that are in which we have 6 pharmacists and 1 MCI member. And in nominated we have 5 people who are having degree or diploma course in pharmacy, and then 3 ex officio members जो कि state government के through appointed हैं. So let's see the functions of the people. Each council shall have a president and a vice president. तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि सेंट्रल लेवल पे हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें कि हम अलग से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं. सिमिलर पॉइंट अगर हम स्टेट के लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे क्या होगा कि ईच काउंसिल शैल हैज़ अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, बट इट कैन बी इलेक्टेड बाय द मेंबर अमंग देमसेल्व्स, या फिर अगर हमें एक्स्ट्रा कोई पर्सन चाहिए है तो इन एडिशन हम उसको ऐड कर सकते हैं. तो वही पॉइंट है, ईच काउंसिल शैल हैव अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द मेंबर अमंग देमसेल्व्स प्रोवाइडेड फॉर 5 years. ड्यूरेशन हमारा 5 years का ही रहेगा जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी था. द प्रेसिडेंट विल बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इफ इट इज़ नॉट ऑलरेडी अ मेंबर ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द काउंसिल इन एडिशन. तो वो 15 के ऊपर 16th मेंबर भी हो सकता है. The state council are before the end of June in each year required to pay to the PCI a sum of equivalent to 1/4 of the fee. 1/4 of the fee, how? If a council is working annually, that is total annual income जो generate हुई है, तो जो फीस आई है total फीस, वो फीस कैसे होगी? तो उस फीस का 1/4 पोर्शन, ये जो 1/4 पोर्शन है इक्वलेंट टू 1/4 पोर्शन, ये उस स्टेट गवर्नमेंट को एज एन फी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है. तो दीज आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट हैज़ टू बी सीन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और यू कैन से स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी, कि हाउ डज इट रेगुलेट एंड गिव्स द फीस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो लेट्स गो थ्रू इट अगेन कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है. वी हैव seen the constitution of state pharmacy council, कि state pharmacy council में हमारे elected members थे, nominated members थे, ex officio members थे.
फिर इनके बाद हमने इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि कैसे कैसे हमने लिए. 7 मेंबर्स इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड 5 मेंबर्स थे एंड 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे. तो ओवरऑल वी हैव अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल. और इनके बाद हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी के फॉर्म में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कैसे लिया. नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल. अब जैसे कि हमने वहाँ पर सेंट्रल काउंसिल के 4 मेजर फंक्शंस देखे थे, सिमिलरली अब स्टेट काउंसिल जो बना है, स्टेट काउंसिल कैसे कैसे उन 4 फंक्शंस को कवर अप कर रहा है. तो पहला मेजर फंक्शन है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर. बिकॉज आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो हम उस स्टेट में जाते हैं जिस स्टेट में हमने पढ़ाई की है या हम रह रहे होते हैं. तो सिमिलरली ये मेजर काम किसका है, उस स्टेट का है. Maintenance of registers. Then we have the entry and removal of name, removal of the name from the register, printing of the register and inspection by state council. तो अभी आपने ये 5 पॉइंट्स में देखा. तो मेजर हमारे जो ये 4 पॉइंट्स हैं दैट इज रिगार्डिंग द रजिस्टर ओनली. तो रजिस्टर को हमें कैसे मेंटेन करना है, उसमें नाम कैसे नोट करना है, कैसे आगे प्रोसेस करना है, ये सारी चीज़ें हमारे स्टेट काउंसिल का मेजर पोर्शन होता है. और लास्ट में हम पढ़ते हैं इंस्पेक्शन ऑफ स्टेट बाय स्टेट काउंसिल, जो कि अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें तो इट कैन बी इंडस्ट्री, इट कैन बी कॉलेजेस, इट कैन बी एनी प्लेस जहाँ पर प्रोफेशन को हमें कंट्रोल करना है, तो हम स्टेट के कुछ लोगों को भेज के वहाँ इंस्पेक्शन करवा सकते हैं. तो लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं. मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग particulars, namely the full name and residential address. रजिस्ट्रेशन के पार्ट पे अगर हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट तो आप उस स्टेट काउंसिल के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे. तो क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हमें वहाँ चाहिए या रिक्वायर्ड है. तो लेट्स सी इट. द फुल नेम एंड द रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द पर्सन, द डेट ऑफ हिज हर फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर, that will be counted as your admission to that register. मतलब after completing your degree or a diploma course आपने सारे उसके norms fulfill कर दिए, you have all the mark sheets, you have the degree as well as सारे documents को complete करके जब आप वहाँ जाओगे तो आपको ये सारी information वहाँ देनी पड़ेंगी. His her qualification for registration, that is whether you are degree holder or a diploma holder. His professional address, and if he is employed by any person, the name of such person, or you can say the employer. If you are working under some person, then you have to give the detail of that organization as well as the name of the person who is your boss. For example, कि अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो उस फर्म का भी डिटेल आपको वहाँ देना पड़ेगा. तो ये कुछ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स में पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं. नाउ एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम्स में बात की जाए कि किस लेवल पे हमारे नेम्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं या रिमूव हो सकते हैं. रिमूवल और एंट्री के नाम पे आफ्टर एन अपॉइंटेड डेट ऑल एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी एड्रेस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल. ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था कि जो मेजर कंट्रोल होता है वो किसका होता है, रजिस्ट्रार का होता है. रजिस्ट्रार कंट्रोल्स ईच एंड एवरीथिंग. तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उनको गो थ्रू करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई होता है. वेरीफाई इन द सेंस कि आप अगर बोलोगे कि मैंने इस कॉलेज से डिग्री करी है, डिप्लोमा करा है, तो उस कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में लेटर जाएगा, वहाँ वेरीफाई किया जाएगा कि इस फॉर दीज डिटेल्स अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या नहीं, तो वो कॉलेज से वेरीफाई होकर वापस आता है. तो ये सारी प्रोसेसिंग कौन करता है, रजिस्ट्रार. तो the applicant has the requisite qualification for registration. He may direct his or her name to be entered in the register. Person whose name has been removed from the register of the other state shall not enter entitled to registration unless the state council give its consent. For example, अगर आपने अपना registration कराया है MP में, but वो वहाँ आपका registration नहीं ले रहे हैं and you have to come back, then आप ये सोचो कि यूपी को तो पता नहीं है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट को, हम यूपी में करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा. इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीइंग अ रेजिडेंशियल ऑफ एमपी गवर्नमेंट, देन you have to take the consent of MP government to transfer your name to UP government.
ये सिचुएशन कब आती है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव completed your degree in UP but you want to stay and shift in MP now. So you are shifting. When you are shifting then you have to shift your name from the registers too. और वो रजिस्टर से नाम शिफ्टिंग कब हो सकता है, नेम शिफ्टिंग कब होगा? व्हेन यू विल अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट नाउ आई वांट टू शिफ्ट माय नेम टू रजिस्टर ऑफ एमपी गवर्नमेंट. तो उस यूपी गवर्नमेंट का कंसेंट जब एमपी गवर्नमेंट को मिलेगा देन ओनली योर नेम विल बी एंटर्ड इन द एमपी गवर्नमेंट. सो एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम्स में ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए व्हाइल गिविंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट. Entry and removal of name में let's go through few more points. That is, upon the entry of the name of a person in the register, the registrar is required to issue to him a certificate of registration in the prescribed form. एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसपे आपके फ़ोटो के साथ वहाँ स्टैम्प के साथ मेंशन होता है योर रजिस्ट्रेशन नंबर. दैट इज़ द नंबर ऑफ द सीरियल नंबर through which your name has been entered in the register, which will give you the detail of that person in whole. वो फॉर्म जब आपकी सारी डिटेल्स वेरिफिकेशन सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से, उस काउंसिल की तरफ से एक आपको फॉर्म दिया जाता है which will state that now you are a registered pharmacist. On the payment of the fee, the registrar is required to issue a receipt thereof, and such receipt is deemed to be the proof of renewal of registration. रिन्यूअल की बात करें तो आपके पास, आपको भी पता है कि वी हैव डिफरेंट लाइसेंस जिनका एक टेन्योर होता है और टेन्योर के बाद वी हैव टू रिन्यू इट. सिमिलरली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सेम वे में काम करता है. दैट आफ्टर 5 years of tenure then you have to give the renewal fee and you have to renew it to next 5 years. तो जो renewal fee की आपको रिसिप्ट मिलेगी that will also prove it that you have gone for the renewation of your certificate. Removal of the name from the register. Now those conditions through which your name can be removed from the register. So first, if his name has been entered in the register by error, if he has been convicted of an offence in any professional respect, कोई भी आपने offence किया है या गलती से आ चुका है आपका नाम, the objectionable conduct by the pharmacist himself, the registered pharmacist during the period of 12 months preceding the offence has been found guilty of a similar offence or conduct, that is after first warning, अगर फिर भी आपने उस offence को repeat किया then also your name can be removed from the register. So these are the 4 major conditions under which your name can be removed from the register, and all these things are maintained by state government because the major work of state government is to maintain the register. Let's see it how. Maintenance of register, entry and removal of names from the register. Now the 4th point, that is printing of register, we are on this point now. So let's see it in detail. Printing of registers कैसे होती है, कब होती है, कौन कंट्रोल करता है, क्या? The register of the State Pharmacy Council were required to publish the register on the 1st April. वही 1st April की डेट है क्योंकि एनुअल हमारा टाइम पीरियड होता है 1 year का. Later on, each year after the 1st April, they were to publish supplements to the register. क्योंकि अगर अमेंडमेंट्स उसके बाद होते हैं देन इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट उसको हम पब्लिश करते हैं. उसको पब्लिश करने के लिए हमें उस रजिस्टर में उस नाम की एंट्री को हम एज एन सप्लीमेंट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं. तो ईच ईयर आफ्टर 1st April जो भी हमारा एनुअल टास्क था उसको हमने कंपाइल किया. हमने मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कंपाइल किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को pass on किया. These registers and supplements are deemed to be the proof that the person whose names are counted therein are registered pharmacists, that these people are working as a registered pharmacist. So this was the printing of registers. Now inspection by state council, that was the last function of the council.
State Council. The State Pharmacy Council have been empowered to appoint suitable number of inspectors having a prescribed qualification to inspect the premises where drugs are dispensed or compounding. They are required to investigate complaints in respect of contraventions of the Act. The inspectors shall deemed to be a public servants within the meaning of the section 21 of the Indian Penal Code. That is, इंस्पेक्शन करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर्स, हम उनको अपॉइंट करके जो भी काम है वो दिया जाता है, एंड इफ़ इट इज़ द रिपोर्ट आर सेटिस्फाइड तो गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे देती है. दैट इज़ द इंस्पेक्शन बाय द स्टेट काउंसिल. सो लेट्स सी इट. The State Pharmacy Council have been empowered to appoint the suitable number of inspectors having prescribed qualification to inspect premises where drugs are dispensed or compounded. That is the area where we are working with the compounding and dispensing of the drugs. The inspectors shall deemed to be a public servant and we have to work and support him accordingly. So, this was the last point, that is the function of your State Council. Now, let us see the highlights, that is the Joint State Pharmacy Council of India and its constitution and functions. We have talked about State Pharmacy Council. Now, Joint State Pharmacy Council कैसे work करता है, कैसे बनता है, we will go through it once. Constitution of State Pharmacy Council. We have seen that the two council were working with executive member, elected member and nominated member, but the case with joint state is different. Here we have a registered pharmacist, government nominee and a medical council nominee. Registered pharmacist 3 to 5 in number from each state, मतलब जो दो स्टेट के बीच में गवर्नमेंट बन रही है उन दो की बात हो रही है, तो या जो गवर्नमेंट हमारे 3 स्टेट हैं तो उन 3 की बात हो रही है, तो उनके बीच में 3 to 5 members from each state instead of 6 in a single state council. Government nominee 2 to 4 from each state instead of 5 and a medical council nominee from each state. Chief Medical Administrative Officer, Government Analyst and Officer in Charge Drug Controller, ex officio members from each state. These people compile the Joint State Pharmacy Council. Joint State Pharmacy Council, the state while entering into an agreement determines which of the participating government shall exercise various functions of the government under the Act. The amount of expenditure to be shared between the government. When the two states government come together to solve any issue, then they beforehand decide which function will be controlled by which state government. ये दोनों गवर्नमेंट आपस में ही पहले ही तय कर लेती है कि किस गवर्नमेंट को किस तरीके से एक्ट करना है, किस चीज़ों में कंट्रोल करना है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा in terms of finance also. So, these things are already predefined when the council are being formulated. So, this is about all we have seen. Let's go through it once again. The State Pharmacy Council, Joint State Pharmacy Council में we have registered pharmacist, government nominee, medical council nominee. These people form the council. Then these are the functions and the way which is being controlled by the government. So, we have seen the State Council, the Joint State Council and the Central Council now. Now, I will be coming up with the next session in which we will be dealing the other points that is left over from the offences and penalties and the major leftover part of the Pharmacy Act. Till now, let us see the main things, that is functions of State Pharmacy Council, that is the maintenance of registers, entry and removal of names, removal of name from the register, printing of register, inspection by the State Council. These were the major roles of State Pharmacy Council because registration का maintenance करना state का काम होता है. And after this we have seen the state, and the state में जैसे कि मैंने आपको एक केस बताया था कि केस state के केस में कि if we are transferring one case to the another state,
तो उस स्टेट ट्रांसफ़र में किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि if some case is of UP state and we have to see that MP state is also involved in that, तो कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, वो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल करता है. The states while entering into an agreement determines, ये pre-determined होता है to which of the participating government shall exercise various functions of the state government under the act, and the amount of expenditure किस तरीके से शेयर होना है, किस तरीके से फीस सेंट्रल गवर्नमेंट को जानी है, वो भी pre-defined होता है. So here we have seen that the pharmacy council act 3 ways, that is at central level, at state level and at joint state pharmacy council. I have gone through in detail with the central council part in my lecture 2, and in this lecture I have gone through the state pharmacy council and the joint state pharmacy council. The difference you have already seen, how the state pharmacy council and central pharmacy council are different. If we talk about the difference in the functioning of state pharmacy council and central pharmacy council, the major point is the education regulation. Education regulation is basically controlled by central pharmacy council, that is the central government of pharmacy controls the education regulation, but state pharmacy council has the control over it and the check to see whether the state is following that norms or not. That means the preparation is controlled by central council, but its activation and follow up is taken by state government. So all the 3 council works together hand in hand to carry out all the functions together and smoothly conduction of all the rules laid down by Pharmacy Act at different levels. The another point where we can see there is a difference between state council and central council is that the registers are maintained by state government, that is the control is given by state government, the entry of name, the removal of name, the registration certificate is issued by state government, but it is controlled by central government. How? We have already seen that they have to pay a fee of 1/4 of fee of the annual prescribed fee that is collected by the state government, and as well as they have to print the copies of the register annually and submit it to the central government. So this is the second point where the pharmacy council has a different of functioning at state level as well as central level. So first point was education regulation, which is formulated by central government and controlled by state government, and second point was maintaining or printing of registers, which is maintained by state government but controlled by central government. And last, that is the joint state pharmacy council. The joint state pharmacy council works when the matter is of within 2 states or 2 or 3 states. When the 3 states are included, then they have to function together and distribute the responsibilities accordingly. So this was all about in the part of lecture 3. I will be soon coming up in lecture 4, that will be the last for Pharmacy Act 1948. Thank you.